जय जगन्नाथ। OSSSC एग्जाम पाई मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सब क्वेश्चन रोचे से क्वेश्चन को लेकिन आमे गोटे सीरीज स्टार्ट करुचे क्वेश्चन आंसर रो सीरीज। चलंतु स्टार्ट करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन एडल्ट इज। एडल्ट गोटे नॉर्मल एडल्ट रो तार ब्लड प्रेशर केते रहइबो? ऑप्शन देखिबा 140/50 mm of Hg, 120/80 mm of Hg, 120/80 centimeter H2O, 150/90 mm of Hg। तो आंसर देखिबा 120/80 mm of Hg। A patient shifted in post-operative unit after liver biopsy। गोटे पेशेंट लिवर बायोप्सी परे पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट को शिफ्ट होइछि। व्हिच पोजीशन विल बी गिवन आफ्टर लिवर बायोप्सी? हमें पेशेंट को को पोजीशन दबा आफ्टर लिवर बायोप्सी? सुपाइन पोजीशन, राइट लेटरल पोजीशन, प्रोन पोजीशन, ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन। सुपाइन पोजीशन को क्षेत्र रे दिया जाए? आफ्टर स्पाइनल एनेस्थेसिया, आफ्टर spinal anesthesia and male catheterization। प्रोन पोजीशन को क्षेत्र रे दिया जाए? ARDS केस रे एंड सर्जरी ऑफ बैक एरिया। ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन को क्षेत्र रे दिया जाए? कोड प्रोलैप्स, प्लासेंटा प्रीविया एंड एग्जामिनेशन ऑफ पेल्विक ऑर्गन। एग्जामिनेशन ऑफ पेल्विक ऑर्गन। तो यार हमर आंसर कौन हम? राइट लेटरल पोजीशन। काहे की दिया जाए? काहे की ना टू प्रिवेंट हेमोरेज बाय अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू पंक्चर साइड। जेहेतु लिवर बायोप्सी हमर राइट लिवर हमर राइट साइड रे रहउची, लिवर बायोप्सी रे राइट साइड रे हमर पंक्चर होची। राइट लेटरल पोजीशन काहे की दबा? जेतु सेटा डायरेक्ट पंक्चर साइड रे प्रेशर अप्लाई करिवो, जोटा कि पेशेंट रो हेमोरेज को प्रिवेंट करिवो। An 8-year-old child comes in pediatric clinic with pain and swelling in knee. Physician initially diagnosed the Lyme disease. Which symptoms are important to include during history collection with Lyme disease in this child? Question कौन कहूँ? An 8-year-old child 8 वर्षर पिला पेडियाट्रिक क्लिनिक को आसी कौन कंप्लेन नहीं कि पेन एंड स्वेलिंग इन नी। तार नी रे पेन आउ स्वेलिंग अच्छी। फिजिशियन इनिशियली डायग्नोस कौन कले ना लाइम डिजीज। लाइम डिजीज कौन हमर? लाइम डिजीज वन टाइप ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। लाइम डिजीज कौन? बैक्टीरियल डिजीज। यार कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन रहउची? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन रहउची? बोरेलिया बुर्बोडोफेरी। Which symptoms are important to include during history collection with Lyme disease in this child? हिस्ट्री कलेक्शन टाइम रे आमे पेशेंट रो कौन सिम्पटम्स देखिबा? फर्स्ट हेडेक, माइलेज, सोर थ्रोट, फीवर, ओलिगुरिया, फ्लैंक पेन, सोर थ्रोट, रैशेस, इरिटेबिलिटी, एक्जिमा, हेडेक, इचिंग। यार आंसर कौन होबो? हेडेक, mileage and sore throat. A nurse is caring a client with cardiovascular problem. गोटे नर्स पेशेंट रो केयर प्रोवाइड करछि जो पेशेंट रो कोन प्रॉब्लम अछि? कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम अछि। The nurse note that he is comfortably breathe in upright position. नर्स कोन नोट करला ना पेशेंट कंफर्टेबली ब्रीथ करि पारुछि जेतेबेले कि से अपराइट पोजीशन रे रहउछि। फाइंड आउट द पेशेंट कंडीशन। पेशेंट रो कंडीशन कोन हे पारे? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर,
pericarditis, angina pectoris, mitral stenosis. एयर आंसर कौन रहिबो? congestive heart failure. A multi-gravida pregnant woman with 26 weeks of gestation comes in OBG clinic. She tells her previous history that she had two live children, one boy delivered at 33 weeks of gestation and another one girl delivered at 39 weeks of gestation. She has no past history of abortion. GTPAL score देखिबा GTPAL जीरो ग्राविडा देखिबा ग्राविडा हमर क्वेश्चन रे कोन देछि प्रेग्नेंट वुमन 26 वीक ऑफ जेस्टेशन रे हमर क्लिनिक को आछि माने ग्राविडा 1 सी टेल्स हर प्रीवियस हिस्ट्री दैट सी हैव टू लाइव चिल्ड्रेन टू लाइव माने लाइव रे हमर 2 आसीबो वन बॉय डेलिवर्ड एट 33 वीक्स हमर माने 33 वीक्स आसिला प्रीटर्म ताले प्रीटर्म रे 1 हैला and another one girl delivered at 39 weeks of gestation 39 weeks हमर टर्म रे आसिला जे 2 लाइव तारो चिल्ड्रेन अछि प्लस 2 she has no past history of abortion past history तार abortion रो किछि नाही ताले abortion रे आसिला 0 ताले हमर कोन हैला G3 gravida 3 term 1 preterm 1 abortion 0 live children 2 हमर ऑप्शन रे कोटा देछि सी ऑप्शन रे G3 term 1 preterm 1 abortion 0 and live 2 most suitable site for IM injection in neonates रो हमर IM injection दबा पई most suitable site कोटा gluteal maximus muscle vastus lateralis muscle mid deltoid muscle vastus medialis muscle एयर आंसर कौन हम बी हम भास्टस लेटरालिस मसल ऑप्शन ए कहीं की होबनी ग्लूटियस मैक्सिमल इटा हमरो नियोनेट केस रे फुल्ली नॉट डेवलप्ड इन नियोनेट मिड डेल्टॉइड मसल रे कौन हम मिड डेल्टॉइड नियोनेट पाई आईएम इंजेक्शन पाई टू स्मॉल हे जाउची मिड डेल्टॉइड एंड भास्टस मेडियालिस कौन हम जोटा कि हमरो क्लोज टू femoral blood vessel रोचे तार हमर राइट आंसर होबो बी vastus lateralis muscle a nurse explain the sign and symptoms of autonomic dysreflexia to family members on discharge उटे पेशेंट ऑटोनोमिक डिसरेफ्लेक्सिया थिला तारो पेशेंट डिस्चार्ज होबो आमे फैमिली मेंबर को कोन एडवाइस दबा जोटा कि से साइन सिम्पटम रे ऑब्जर्व करिवो द नर्स इंस्ट्रक्ट to patient's family member to assess for which sign and symptoms nurse instruct करिवो family member को patient रो को sign symptom को assess करिवा पई facial flushing and headache sudden hypotension and dizziness pupil dilatation and tachypnea pallor and itching on body तमे फैमिली मेंबर को कोन एडवाइस करिवा कोन असेस करिवा से फेशियल फ्लशिंग एंड headache jolly surgical retractors is used in which procedure जो इमेज टा देखुचंती आपण ए इमेज को कोन कहै जाय jolly surgical retractor इटा हमर को क्षेत्र रे यूज होची थायराइडेक्टोमी हिस्टेरेक्टोमी लैप्रोटोमी एंजियोग्राफी jolly retractor हमर यूज होची थायराइडेक्टोमी प्रोसीजर रे honey colored crust are seen in which disease condition जो इमेज टा देखुचंती आपण पेशेंट रो लिप साइड रे जो हनी कलर्ड क्रस्ट हेची इटा हमर को डिजीज रे देखा जाय एक्जिमा सोरियासिस इम्पेटिगो अर्टिकारिया हनी कलर्ड क्रस्ट को डिजीज रे देखा जाय इम्पेटिगो ए फिजिशियन ऑर्डर नाइट्रोग्लिसरीन पैच टू ए क्लाइंट ए नर्सिंग ऑफिसर फॉलो दिस ऑर्डर which is the best skin surface to paste this patch physician order करचंती nitroglycerin patch client को दबा पाई a nursing officer follow this order nursing officer follow करची physician को order को which is the best skin surface to the paste को skin रो को surface रे कोटा बेस्ट सरफेस रे हमें नाइट्रोग्लिसरीन पेज को अप्लाई करि परिबा रफ सरफेस हेयरी सरफेस नॉन हेयरी सरफेस ऑयली सरफेस नाइट्रोग्लिसरीन पेज हमें कोठी यूज करिबा नॉन हेयरी सरफेस रे
Find out the level of bilirubin in neonate with zone 3 using Kramer's scale. इमेज टा आपण माने देखि पारुथिबे इटा हमरो क्रामर्स रूल कुआ जाए जोटा कि नियोनेटल जंडिस को असेस करिया पय त हमें देखिबा क्रामर्स रूल कोन क्रामर्स रूल रे हमरो कोन कोन रहउची पांचटा जोन रहउची फास्ट देखिबा जोन तापरे देखिबा एरिया ऑफ को बॉडी रे को एरिया को से इफेक्ट करूची एरिया ऑफ बॉडी सरफेस एरिया ऑफ बॉडी लेवल ऑफ बिलिरुबिन जोन फास्ट रे देखिबा जोन फास्ट रे को एरिया को इफेक्ट करूची ना हेड एंड नेक को बिलिरुबिन लेवल केते रहउची 4 to 8 mg per dl नेक्स्ट देखिबा जोन सेकेंड रे को एरिया को इफेक्ट करची ना अपर ट्रंक रे जोटा कि आछि चेस्ट एंड अपर बैक चेस्ट एंड अपर बैक तार बिलिरुबिन लेवल ऑफ बिलिरुबिन केते रहउची 5 to 12 mg per dl देन देखिबा जोन 3 रे हमरो लोअर ट्रंक एंड थाई तार बिलिरुबिन केते रहउची 8 to 16 mg per dl जोन 4 रे आर्म्स एंड लोअर लेग बिलिरुबिन लेवल केते रहउची 11 to 18 mg per dl नेक्स्ट देखिबा जोन 5 रे को एरिया बॉडी रो एरिया को इफेक्ट करूची ना पाम एंड सोल तार बिलिरुबिन लेवल केते रहउची 15 to 20 mg per dl अब नेक्स्ट देखिबा हमर क्वेश्चन रे कोन देइतला ना फाइंड आउट द लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन नियोनेट विथ जोन 3 यूजिंग क्रामर्स स्केल जोन 3 रे हमर कोन रहउची 8 to 16 mg per dl तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमर राइट आंसर कोन होबो सी होबो 9 to 11 mg per dl a doctor orders 500 mg of medication the level on the vial reads 250 mg how many ml will you administer तो डॉक्टर ऑर्डर्स करचंती हमकु 500 mg of medication ताले हमर डिजायर्ड डोज केते रहइबो डिजायर्ड डोज हमर 500 mg the level on the vial reads available dose केते अछि available dose हमर अछि 250 mg per 5 ml ताले क्वांटिटी हमर केते अछि क्वांटिटी रहइला 5 ml how many ml will you administer drug calculation रो फार्मूला हमर कोन desired dose divided by available into quantity according to formula हमर desired dose केते रहउची 500 mg divided by available केते रहउची 250 mg into quantity केते रहउची 5 ml एको हमें कैलकुलेशन करिबा त हमर आंसर कोन आसिला 10 ml 10 ml आसिला को ऑप्शन रे दैछि ऑप्शन बी रे होछि 10 ml त हमर राइट आंसर होछि ऑप्शन बी 10 ml ऑर्डर amoxicillin 125 mg तो हमर डिजायर्ड डोज केते दैछि डिजायर्ड डोज amoxicillin 125 mg available 250 mg per 5 ml available केते 250 mg क्वांटिटी केते दैछि 5 ml how many ml should be given ताले केते ml हमें पेशेंट को एडमिनिस्टर करिबा फार्मूला कोन डिजायर्ड डोज डिवाइडेड बाय अवेलेबल इनटू क्वांटिटी डिजायर्ड हमर केते दैछि 125 mg अवेलेबल केते अछि 250 क्वांटिटी केते 5 ml रे एको में जदी कैलकुलेशन करिबा मोर आंसर केते आसीबो 2.5 ml को ऑप्शन रे दैछि ऑप्शन बी रे 2.5 ml हमर करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन बी 2.5 ml a child is prescribed amoxicillin 40 mg per kg per day
तो हम देखिए एमोक्सिसिलिन 40 mg पर kg पर डे इन 2 डिवाइडेड डोज, एटा को हमको 2 डिवाइडेड डोज रे दबार अछि पेशेंट को। द चाइल्ड वेट 18 kg, चाइल्ड रो वेट केते अछि 18 kg। हाउ मच शुड द नर्स एडमिनिस्टर पर डोज, पर डोज हमें पेशेंट को केते mg एडमिनिस्टर करिबा। ताले देखिए पेशेंट रो वेट केते देछि 40 mg पर kg पर डे, पेशेंट रो वेट केते 18 kg, ताले 40 into 18 kg पर डे हमको पेशेंट को दबार अछि। 40 into 80 केते हबो हमर 720 mg पर डे दबार अछि। तो हमें 2 डिवाइडेड डोज 720 mg हमें दीटा डोज रे दबा। तो क्वेश्चन हमर देछि हाउ मच शुड नर्स एडमिनिस्टर पर डोज, पर डोज हमें पेशेंट को केते दबा ना 720 by 2 जोटा कि आसीबो 360 mg पर डे। कोटा देछि ऑप्शन सी रे 360 mg पर डोज रे हमें पेशेंट को दबा। Dev, a 6-year-old boy, was rushed to the hospital following her mother's complaint that her son has been vomiting, nauseated, and has overall weakness. After a series of tests, the nurse notes the laboratory result potassium 2.9 milliequivalent per liter. Which primary acid base imbalance is this boy at risk for if medical intervention is not carried out? এই क्वेश्चन टा आपण मानक पई टास्क रहिला। এই क्वेश्चन रो आंसर आपण माने मते कमेंट रे आंसर कहिबे। आ जो क्वेश्चन आमे डिस्कस करले आज, जदि कहारो भी किछि क्वेश्चन रे डाउट थाए ताहले आपण कमेंट रे डाउट पचारि परिबे। थैंक यू एवरीवन।